हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी, कुछ स्टॉक्स के बारे में, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करूंगा आप सबके साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में मैं अगर देखता हूं कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है अभी भी अप ट्रेंड में है, एंड इन द प्रीवियस मंथ ऑफ नवंबर करेक्ट हुआ था, बट पुल बैक आया है वापस थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 5% पुल बैक आया है फ्रॉम द रीसेंट बॉटम्स वेयर निफ्टी फ्यूचर टेस्टेड क्लोज टू 23,270। और ये पुल बैक जो आया है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे, इट हैज पुल बैक ऑन द बैक ऑफ दिस 38.20% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से हमको दो कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन में दिख रहे हैं, ऑल्दो ट्रेंड अभी भी फ्लैट है निफ्टी फ्यूचर्स में, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में और डेली टाइम फ्रेम चार्ट में भी एक फ्लैटिश ट्रेंड ही है। इट इज नॉट एन अप ट्रेंड, बट यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था, 30 के नीचे चला गया था, एंड दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ये पुल बैक आया। नाउ ये जो आपको दो जोन्स दिख रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे थोड़े से रेड कलर में रखा हुआ है और एक ग्रीन कलर में, तो ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस बैंड है। ये देखिए, रेजिस्टेंस बैंड का यहाँ पे जो पूरा लेवल है 24,252 से लेके 24,600, और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है करीब 24,988, यानी कि 25,000 से लेके 25,225। तो ये दोनों रेजिस्टेंस बैंड है। सो इन मीडियम टर्म में ये बोलूंगा कि डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ट्रेंड फ्लैट है, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज स्टिल डाउन, और ये सिर्फ एक पुल बैक आया है। हालांकि अगर आप निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करते हो, निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करोगे, एंड इफ यू गो इन extreme short term like a 5-minute chart or maybe even a 15-minute chart, so you will see some sort of pullback happening on the back of positive divergence in RSI. So I can say one thing, that ये जो recent high है एक या दो दिन का 24,188 या 190, ये सरपास होता है थोड़ी देर के लिए, maybe 100 points or maybe 150 points in the Nifty on the upside cannot be negated, यानी कि ये avoid हम नहीं कर पाएंगे, but overall we are still in the pullback mode only, nothing more than that. ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट को देखें, मैं कुछ जोन्स आपके लिए हाईलाइट करता हूं। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर जोन, सी दिस जोन एंड इवन ओवर हियर, आई थिंक ये बहुत क्लियर है, हमको दिख रहा है कि ओवरऑल इट इज लिटरली whipsawing, it's just going up and down. So as a बैंक निफ्टी ट्रेडर जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है बैंक निफ्टी में शायद कुछ हफ्तों के लिए, आई थिंक आई विल नॉट टेक अ पोजीशन इन बैंक निफ्टी एज अ ट्रेडर। मैं अवॉइड करूंगा इसको, बिकॉज इट्स नॉट ट्रेंडिंग। इफ यू सी दिस पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, द वे इट इज ट्रेंडिंग ऑन द अपसाइड, दिस इज द मीटी पार्ट। यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है जब मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर या नीचे ही जा रहा है मार्केट। तो आई थिंक आई विल अवॉइड दिस इंडेक्स। नाउ गोइंग अहेड इन PSU बैंकिंग पैक, देखिए मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी दीज 2 or 3 कैंडल्स, सो ओवरऑल हम देखेंगे तो लास्ट 2 या 3 महीने में वी हैव बीन रेंज बाउंड। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी आएंगे तो यस, वी विल सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, प्राइसेस गोइंग डाउन अप, बट ओवरऑल हम अभी भी ज्यादातर चॉपी मार्केट में है, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट में, वी आर इन अ रेंज। सेम थिंग इफ यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, आपको यहां भी सेम चीज ही दिखेगी। ठीक है, ओवरऑल सेम चीज दिखेगी। बीच में देयर वेर टाइम्स व्हेन देयर वाज डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मेड ऑन द डाउन साइड। सो जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मैं वही रिपीट करूंगा। इफ एनीवन वांट्स टू ट्रेड इन द PSU banking pack, you have to be a little bit careful. Now if I share with you few stocks like देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए कैनरा बैंक देखें, अगर हम सेंट्रल बैंक देखें, महाराष्ट्र बैंक देखें, ऑल दीज बैंक्स, महाराष्ट्र बैंक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रीसेंट हाई को सरपास किया है, वी विल हैव टू कीप अ प्रॉपर वॉच ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वी आर स्टिल जस्ट इन अ पुल बैक मोड, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वी आर जस्ट इन अ पुल बैक मोड, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, इट इज रिजेक्टिंग प्राइसेस ऑन द अपर लेवल्स,
यस नीचे से बाइंग हुआ है बट इट इज ऑल्सो रिजेक्टिंग ऑन द अपर लेवल. सो आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक व्यू क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है पीएसयू बैंकिंग पैक. गोइंग अहेड इन प्राइवेट बैंकिंग पैक, नाउ यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है कि जो दो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट है, एक कोटक, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक. अगर हम सिर्फ इंडेक्स को देखें, इंडेक्स के चार्ट को देखें, देन द रियल पिक्चर इज डिफरेंट. मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं ये क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूं. अगर हम इस चार्ट को देखें, आई जस्ट रिमूव दीज फ्यू साइंस, ये अभी पुराने हो चुके हैं. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, आपको क्या दिखेगा, प्राइस ऊपर से करेक्ट किया, पुल बैक, करेक्ट, पुल बैक, करेक्ट, पुल बैक, नाउ इट्स अगेन ट्राइंग टू करेक्ट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग सो फार इन पीएसयू बैंकिंग पैक. बट अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाऊं, यानी कि इसके स्टॉक्स में जाऊं, जैसे कि मैं अगर कोटक बैंक ओपन करता हूं सबसे पहले. So Kotak Bank, according to me, yes, I would agree. It is a little bit more weaker in comparison to the other two stocks like ICICI and HDFC. तो यहाँ पे हमको clearly दिखेगा we are forming lower highs and lower lows very very clearly. You can see the first high, second high, and this is the third high. But if I open HDFC Bank, जिसके ऊपर मैंने positive view share किया था, so it's outperforming. And HDFC Bank has the highest weightage in the banking pack. So अगर आप private bank का chart देखोगे एज एन इंडेक्स, और अगर एचडीएफसी बैंक देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा. सो आई थिंक नाउ डेज इट इज इंपॉर्टेंट के इंडेक्स के अलावा आप स्टॉक्स स्पेसिफिक जाके भी चार्ट्स चेक करें, अदरवाइज आपको ठीक से पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है. ठीक है. सो ओवरऑल आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज आउट परफॉर्मिंग. थोड़ा सा मोमेंटम लैक कर रहा है इन लास्ट 3-4 days, बट ओवरऑल so far I think it's doing pretty well for itself. ICICI Bank. ICICI Bank has given a decent breakout. ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल. ठीक है. आई थिंक ये कैंडल के ऊपर अगर क्लोज दे देता है आईसीआईसी बैंक, देन मे बी सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम विल बी विजिबल ऑन द अपसाइड. ठीक है. एनर्जी पैक. एनर्जी पैक, आई थिंक इट नीड्स टू गिव अ वेरी गुड पुल बैक, एंड द रीजन फॉर दैट इज जिस तरह से इसने करेक्ट किया है, द वे इट हैज करेक्टेड, इट इज प्रीटी शार्प आई शुड से. इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे भी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है. अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बार पहले पुल बैक हो चुका है. दिस इज दैट पुल बैक. आई थिंक दिस इज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड दिस इज द सेकंड टाइम वी आर टेस्टिंग हियर. So we are at a support band, no doubt about that. Only problem what is happening over here is ये जो swing इतना बड़ा है, that is the reason this 23.6% is acting as a decent resistance. Second thing is, in all these stocks of energy pack, Reliance is lacking in terms of momentum. Reliance भी बहुत ज्यादा ऊपर से करेक्ट हो चुका है अगर आप ठीक से चेक करोगे तो. ठीक है. यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ है. अगेन इट हैज फाउंड सपोर्ट इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट. देयर आर कपल ऑफ पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव कैंडल्स इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, बट इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट इट्स नॉट एबल टू गो. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. एक तो ये 23.6% इज अ रेजिस्टेंस, प्लस दीज जोन्स, ये जो क्लस्टर्स हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. सो एट टाइम्स क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो सेंस कर लेता है कि ऊपर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ पुल बैक और समथिंग लाइक दैट. सो क्या जगह है इस स्टॉक में ऊपर जाने का? जरूर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू गिव अ डिसेंट पुल बैक, बट आई थिंक आने वाले दिनों में पता चलेगा दैट whether it wants to give a pullback or go down. According to me, there is surely some space in Reliance because it is at a support in the monthly time frame chart. It is slightly overstretched on the downside in the weekly time frame chart, and it is in a pullback mode in the daily time frame chart. So we'll have to wait and watch what happens in this particular stock. Now going ahead in the metal pack, I think metal pack, same thing I'll say that it is in a pullback mode. You can see lower lows बन चुके हैं. Although this I will not consider as a high, but yes, we can say that it's trying to give a pullback. यहाँ पे एक weekly time frame chart में support है. ये support अगर टूटता है, only then we will be able to go down. And टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टील एंड पावर, इन सब में से एक स्टॉक मुझे थोड़ा सा वीक
दिखाई पड़ रहा है, that is Hindalco. It is slightly more weaker according to me in comparison to other stocks. But if you have a look in the 2-hourly time frame chart, there is still not a proper breakdown. So I think इसमें जब breakdown आएगा, only then it is probably important to go ahead and take the action in this stock. But overall, within this sector, Hindalco is as of now the weakest. Autopack. Autopack, I think, is one of the sectors which has outperformed in the bull run, and now it is correcting because it needs to correct. It has a lot of space to give a pullback very nicely, but the reason why it is not able to give a slightly larger pullback and probably retrace a little bit more in this zone is due to this particular candlestick cluster. If you see this particular region, it's very smooth, but over here we have a lot of zigzag movement which is not allowing this price to go higher, और यहाँ से थोड़ा सा selling pressure हमको दिखाई दे रहा है. So overall, according to me, it is just in a pullback mode and nothing more than that in the Autopack. Finance. Finance, again, I would say that it is consolidating, you can say. It is completely sideways. So as a sectoral chart अगर देखोगे तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ analysis करने जैसा नहीं दिखाई पड़ेगा. But if you go to this particular stock, Chola Finance, this is one of the stock which has corrected a lot. It gave a pullback and it's not able to pull back itself pretty nicely. Although यहाँ पे जगह काफी ज़्यादा है pullback करने का, because the way it has fallen, the way it has corrected, it should also give a pullback pretty nicely. Because जितना ज़्यादा pullback होता है उतना stock ऊपर की जितना ज़्यादा correct होता है stock उतना ज़्यादा pullback भी हो सकता है. But it is not happening because of this particular consolidation zone over here. And overall, this stock looks slightly weak in terms of short-term analysis. Consumption pack. Consumption pack, I should say that overall it has corrected. This particular sector is still in a pullback mode. Does it have a lot of space on the upside to give a pullback? The answer is pretty much yes. But यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो consolidation zone है, it is not allowing the price to go higher. कितने दिन यहाँ पे हो चुके हैं? Almost 5 days. 5 दिन से ये सेक्टर ऊपर नहीं जा पा रहा है. So once it gives a pullback, it breaks this particular zone, only then the pullback might continue on the upside. Okay. But overall, it's just a pullback. It's not the start of a new trend or anything like that. FMCG pack. FMCG pack, sharp fall, sharp pullback. It's trying to go higher, not happening. Some sort of selling is visible on the upside. One of the stocks जो मैंने देखा, Colgate Palmolive, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन द बुल रन. इट गेव अ शार्प सेल ऑफ. इतना ज्यादा शार्प था कि जो आरएसआई था ऑलमोस्ट 15 के नीचे गया था. एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू करेक्ट. सो ओवरऑल in short term, I think this stock looks a little bit weak. If you have a look at other stocks in this particular sector, stocks like ITC, it's still consolidating according to me. There are some signs of probably getting tired कि भाई ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है स्टॉक. I can understand. But still अभी भी कोई breakdown 2 hourly time frame charts में इसमें नहीं दिख रहा है. If you see the likes of Marico is one stock which has been able to give a stupendous pullback. It's a very good pullback. Now what happens after this pullback? Does this pullback result into an uptrend or does it fizzle out on the downside? ये I think आने वाले 1 या 2 हफ्ते में हमको पता चले. But overall, Marico is looking a little bit more stronger in comparison to other stocks in this particular sector. Hindustan Unilever, again, a stock which is one of the strong stocks when it rallied in the starting of April 2024 till the ending of September 2024. It has corrected. After correcting, it is trying to give a pullback. And again, it's not able to surpass this particular consolidation zone. So does it have some space to actually give a pullback? The answer is yes. But I think आने वाले वीक में पता चलेगा कि क्या हो पा रहा है.
एंड आई थिंक ये जितने भी कंसोलिडेशन जोन से अगर आप इनको कंपेयर करोगे निफ्टी फ्यूचर के साथ, सेम थिंग इज एविडेंट इन निफ्टी फ्यूचर, सेम थिंग। ये देखिए यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन है। दैट इज द रीजन आफ्टर गिविंग द इनिशियल पुल बैक निफ्टी हैज स्टॉल्ड, यानी कि निफ्टी रुक गई है एक जगह पे। इट्स नॉट एबल टू रैली ऑन द अपसाइड फर्दर बैक। 5 दिन 4-5 दिन से एक ही जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली। नाउ एफएमसीजी के बाद वी विल गो टू इंफ्रा पैक। Infra pack, one of the smoothest sectors which gave rally on the upside in the bull run. The sector is now trying to give a pullback again at a resistance, and in this sector I would say that बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर एसीसी पे मैंने नेगेटिव व्यू शेयर किया था, काफी करेक्ट हुआ, देन इट गिव अ पुलबैक। अंबुजा सीमेंट पे भी मैंने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, समवेयर in this zone, then it stock corrected by 15%. Now it is giving a pullback. But if you go and if you check minutely in this particular sectors, you will also find some outperformance over here in stocks like Ramco Cements. So you can see Ambuja Cement, ACC, both are of the cement sector. But if you see Ramco Cement, it is of the same sector, but the stock is outperforming. So if you just go and check little bit properly in this particular sector, तो आपको थोड़े से stocks ऐसे मिल जाएंगे which are slightly trying to outperform the market. If you now look at HAL, although it is just a pullback से और ज्यादा कुछ भी नहीं है, but it has tried to surpass the previous high. It's trying. I'm not saying it's successful. It's trying to surpass. So we'll have to keep our eyes open when we are talking about the infra pack. Okay. And again, सिर्फ सेक्टर एनालिसिस नहीं कर रहा है, आपको डीप डाइव करके स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। IT pack surely it is one of the sectors which is outperforming clearly in comparison to any other sector. It is number one sector according to me right now. Again, जो मैंने स्टॉक्स शेयर किए थे, फर्स्ट वन वाज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा कंटिन्यूज टू आउटपरफॉर्म, ऑल्दो लास्ट 3-4 दिन में ज्यादा इसमें मोमेंटम नहीं है, बट सो फार सो गुड। आई थिंक इट इज स्टिल आउटपरफॉर्मिंग. If it starts coming down further, then maybe we'll have to keep our eyes open that again it doesn't retrace more, or else our views will get negated. Second stock is TCS. TCS मैंने पिछले last 2-3 वीडियोस में बोला था that there's a possibility that this stock can outperform on the upside. Stock ऊपर गया जरूर है, it has rallied in terms of percentage, but यहाँ पे in this zone I could not see a very confident breakout, a big green candle which was visible over here. So yes, it is still a candidate for outperformance, but जब तक इसमें कोई positive candle नहीं बनेगा, I will probably not inculcate it further more in my trading portfolio. I'll wait and watch. Infosys अगर मैं check करूं, Infosys initially gave a decent pullback on the upside. Again, यहाँ पे भी same चीज है, not enough positive candle because it has a wick on the downside. So you have to be a little bit careful. After rallying, it has retraced. If it start retracing a little bit more further, then you'll have to keep your eyes open. So far, so good. Nothing bad as of now, I should say. Okay. Pharma. Now, this is the most trickiest sector as of now. Why I'm saying trickiest? See, first thing is it has outperformed a lot. The sector has corrected. Again, it's trying to pull back after retracing up to 38.20% retracement. Now coming to the daily time frame chart, it is trying to bounce back from this retracement plus this trend line. So we have this initial pullback, which probably did send signs to swing traders that यहाँ पे outperformance मिलेगा, but suddenly the levels started, the prices started coming down, and now we are giving a pullback. If this pullback continues a little bit more further, then possibly you will see some outperformance happening in this particular sector. One of the stocks which is outperforming is Torrent Pharma. मैंने 3 stocks share किए थे. I think one was Lupin, Sun Pharma and Torrent Pharma. Out of that, if you check Lupin, first of all, Lupin actually very badly, it literally came down and just
cut down all the positivity which was created in this particular stock on the upside. Second one was the king of pharma pack, which was Sun Pharma. Same thing is evident over here. Went up, came down, but now something little bit more positive is evident, is this positive divergence. So yes, it does have some sort of positivity, Sun Pharma, but it should break this high to go higher. Torrent Pharma, according to me, if you check this stock, it did give a pullback, it did give a breakout. अगर आप 2 hourly time frame charts में देखें, hourly time frame charts में नहीं देखना है, आपको 2 hourly में देखना है. It did give a pullback, a breakout. Again, it retraced on the downside, but it did not close below this dual moving averages, and it kept on rallying. So I think positive view continues in Torrent Pharma on the upside. PSE sector, one of the weaker sectors, I think, and extremely overbought when the bull run was going on. Almost 90 के ऊपर चला गया था RSI in the monthly time frame chart. It's trying to give a pullback. So far, so good. But मैं इतना ही बोलूंगा कि it's just a pullback as of now, nothing more than. Realty pack, again, one of the nice sectors which rallied in the bull run, trying to give a pullback. But if you check a little bit more clearly in the weekly time frame chart, you will be able to see these first high, second high, and probably if the sector doesn't rally further, then this will be the third high. So overall, we are continuing in a lower high formation as per Dow theory, which is a negative sign. Again, this is the previous high, isko surpass nahi hona chahiye, and this is in the daily chart. Okay, in the weekly chart, this is the high, and one of the stocks which is slightly more weaker according to me in this particular sector is Godrej Properties. Okay, Midcap, again, I think just a pullback mode, nothing more than that. Till the time this high is not surpassed, I think we are just in a pullback mode, nothing more than. All right. So summing it up all, मैं इतना ही बोलूंगा कि मार्केट ओवरऑल फ्लैट ट्रेंड में है वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम चार्ट में. हाँ, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में मैंने जो निफ्टी स्पॉट मैंने इनिशियली दिखाया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, 100-200 पॉइंट्स पुल बैक ऑन द अपसाइड इन निफ्टी इज नॉट इम्पॉसिबल. इट कैन हैपन बिकॉज कभी कभार ब्लिप में हो जाता है ऊपर की तरफ, बट सो फार आई शुड से हम लोग सिर्फ एक पुल बैक मोड में है. अब यहां से डायरेक्शन क्या होता है मार्केट का, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ रिएक्टिव ट्रेडर. आई डू नॉट बिलीव इन प्रेडिक्टिंग द मार्केट के अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा. यस, if I have a sign on the chart that it says that it's going to go down or this is not a pullback, probably this is the start of a new rally. तो ये जब मुझे charts पे दिखेगा, that time I'll start sharing with you. All right. So I think we should trade less, wait patiently, keep on tracking the markets, and when the right time comes, only then, सिर्फ वही टाइम पे जब एक अच्छा सिग्नल मिलेगा चार्ट पे, उसी टाइम पे हमको कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए. All right. Trade less, trade wisely. Thank you.